Oh, no student. Okay, let's start. Anyways, you can watch a recorded lecture in case. So this is the timeline. If you see, so the thing about atom actually starts with Democritus. So he was the first person who actually, basically, he proposed that all the matter, include the space and time, was made up of a small unit named atom. He did not experiment and had a little evidence, but his idea was kept on by Lucretius. So actually, if you see, or even इसको बोलते हैं वैशेषिका philosophy. It was given by the sage named Kannad. After Democritus, you see the timeline, it's 460 BC. And if you see this Rishi, which is Kannad, it's about 6 BC, before him. And after this, there is a scientist who comes with the actual, who this was a John Dalton, 803. Did he actually agreed that all matter was created by atoms that he believed were inside destructible. They were indestructible. So stated that compounds are created by combining two atoms, and that the atoms of given element are identical in their mass and property. We'll see details how Dalton gave theory. Just want to go through the timeline. How much time did scientists have given, or how long it took just to discover about an atom? Okay, finally, Purva, good morning, good morning. So we are just discussing about the timeline right now, and as you are always late for class, you have become a regular schedule for you. But no, I'm not going to stop, because I'm going to continue. You can watch a recorded lecture also later on. And if you have any doubt, you can immediately tell, and we'll discuss that doubt. So Dalton, after that, John Dalton, then there were like Mendeleev's who created. Then there was Goldstein who discovered the positive particles. That there were unlimited kind of experiments might have done to come to some conclusions. Then comes J.J. Thomson who discovered the electron, and then the great breakthrough which they got in the structure of atom were Ernest Rutherford. And then Millikan, he used oil drop experiments and find the charge on an electron. And then Niels Bohr, then Frederick, then Heisenberg and Chadwick actually discovers the neutron. So this is the whole timeline. If you see this timeline, it starts with Dalton, which is 803. And if you see it's 1932, you actually discover the neutron. So if you see, it took almost more than 130 years, just to know this atom, what is inside the atom, and still the discoveries are keep going. It's like no end. Still, there are new things which keep coming and keep advancing technology.
Now let's understand and see what John Dalton's atomic model was. This atomic model of John Dalton, we are studying this. The first he proposed was the matter. We proposed was the matter is made up of small indivisible atoms. Then atoms cannot be subdivided or created or destroyed. And obviously it has two more subpoints which he proposed. So this is his second point, that atoms cannot be subdivided or created, or they cannot be even destroyed. And then atoms of difference have different properties. Same elements have same properties, while as different elements have different properties. And then atoms of different elements can form compounds just by rearrangement. That's the third point. Purva beta, if you are not able to hear me, I'm again telling you have internet issues. Please resolve them. Or even if you're not audible, I'm actually putting everything on the board. Just read them. And after that, I'm going to provide you backpack. So you don't need to write, just read and understand it. If you have any questions, you can ask me in the chat. Even if you are not able to hear me, you don't worry, because you can still see whatever I'm talking. I'm putting it on the board. And your internet issue still continues. I don't think in this life you will resolve this internet issue, and this will continue like this only. So I can't help you. I already did 2 3 classes. They are very clear voice audio. So here unfortunate position is that you are the only student. There, I take poll that if someone says that I'm not able to hear, then I tell other students, are they able to hear? So then they say yes, we are able to hear. That means that internet has some issue. So from you side, it's difficult to confirm where's the problem. Is the problem with you, or internet, or with me? Just these to put the different theories which we are going to study, and right now we are studying about this. So these are the different models जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अभी हम जो पढ़ रहे हैं, this is like Dalton's model which we are studying right now. This is we are studying. So he proposed that ये अभी हम पढ़ रहे हैं, John Dalton. Then will come. He told like it is like a solid sphere. This whole atom is like a sphere, and it's a building block. And then obviously these kind of three proportions which he told, that you have to keep in mind. I have to remember that. And then this is atomic model of then J.J. Thomson. He told this whole sphere is positively charged, and negative uh, electrons are embedded. And then Rutherford gave his theory. Then comes Bohr's model. Then
uncertainty principles. So these are all different models, and इसमें से obviously 1, 2, 3, 4 are in your textbook which you are going to study. This you're going to study in your future classes. Now, what happens basically, these four models, as we were discussing, the matter is made of small indivisible atoms, or atoms cannot be divisible, created. So all this was actually given by our first scientist. His name was uh, Dalton. So इसलिए इसको बोलते हैं Dalton atomic theory भी बोलते हैं. So just to, so that you can create more good impression in your mind, I'm just making a pictorial way. जो भी मैंने, this is the whole thing. Again, I'm putting it. So we already discussed this. This is John Dalton, basically. And you don't have to worry about notes. Don't try to make notes when I'm teaching you, because ये सब notes मैं एक PDF में आपके backpack में डाल दूंगा. I hope you know backpack. Yes, if you know what backpack means, a section in your tab, उसमें ये जितने भी मैं आज notes आपको पढ़ाऊंगा will upload in your backpack. So if you have any question, queries, you can ask me. There I will stop and explain. And if you don't have any questions, I will. So this whole thing with John Dalton ने किया. इसने क्या बोला, एक solid sphere है, he theory. Atoms are small, indivisible, can be divided, created or destroyed. An element is identical. उसके atoms जो हैं वो identical. So different elements उनके different properties होते हैं, और atoms and different elements combined. This is everything about John Dalton. So just to understand and about some more exactly what exactly he was about to say, let's see some more examples. First thing what he told, like they, if there is two elements, same elements, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ element A, and this is same element B. They are separate, but this is one piece of that element, this other piece. What he says, इन दोनों elements का जो atom रहेगा, it will be same. सेम रहेगा उनका एटम स्ट्रक्चर, सेम रहेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम ही है. लेकिन अगर आप इन दोनों को डिफरेंट कर दे, अगर मैं एक और बी एलिमेंट ले लूं, इसका जो एटम रहेगा उसका साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, वी डोंट नो, इट विल बी डिफरेंट. सो दैट मींस atoms of different elements will have different properties. और अगर आप देखेंगे, you know, if you see, everything is made from an atom. Everything is, as you have no doubt till now, so I'm continuing. So if you know, everything is made from atom. आपका पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कार ले लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो, थिंग मेड फ्रॉम एटम. तो एटम तो हर जगह सेम ही है, एटम ही है, हर जगह वही इलेक्ट्रॉन है, हर जगह वही प्रोटॉन है, हर जगह वही न्यूट्रॉन. बट पॉइंट इज दैट, आई होप आपको ये दिमाग में समझ में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर एटम ही सबका सब बनता है तो फिर सब चीजें अलग क्यों है. यू नो, अगर आपका पेन भी एटम का बना है, और मेरा जो कोई भी मेरा एनी अदर ऑब्जेक्ट पेपर भी एटम का बना है, तो इनका प्रॉपर्टीज इतना अलग क्यों है. सो उसका आंसर इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. हाउ एटम्स आर अरेंज्ड, दे डिफाइन द प्रॉपर्टी of any element. For example, if atoms are arranged in a linear way, तो उसका एक property होगा. If these atoms are arranged in a some hexagonal way or in some other way, so it depends on the whole arrangement of atoms. The main point is about how the atoms are arranged. Arrangement. Arrangement of atoms. Arrangement of atoms is the point which actually creates a variety of properties which differentiates one element from other. So this was John Dalton. Actually, he was a very pioneer in actually even proposing this. Simple example of atom अगर आपको समझना है, जैसे you know in if you take a house, you know एक house का जो building block है, it's what? एक house का अगर आप building block देखेंगे, या for example if I take a wall, मैंने एक ये दीवार ली,
उसका अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेटा? उसका बिल्डिंग ब्लॉक है ब्रिक्स, है कि नहीं? बोल सकता हूं ये पूरा गर्भ सर ब्रिक का बना है, तो एक ब्रिक जो है वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है बिल्डिंग ब्लॉक। इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक। Similarly, atom is a building block for all different elements. Now, how जैसे इस ब्रिक को आप अरेंज करेंगे, बनाएंगे, इसी ब्रिक को आप डोम का शेप दे सकते हैं, इसको आप स्ट्रेट वॉल का शेप दे सकते हैं, आप कैसा भी शेप दे सकते हैं ना इस एक ब्रिक को, तो वैसा वो दिखेगा। सिमिलरली इस एटम को आप कैसा अरेंज करेंगे, दैट इज द वे द डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट items will get their property from. So if you have any questions still here, please tell me, otherwise I will move forward. Okay, so let me move ahead because you don't have any questions right now. Now this, so the Charles Dalton ने तो एक पाइनियर एक दे दिया, एक बता दिया भैया एक स्फीयर है, बट ही डिड नॉट स्पोक एनीथिंग अबाउट दिस चार्ज। उसने इसके चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया। ही डिडंट स्पोक एनीथिंग अबाउट दिस चार्ज। एंड बट इफ वी नो ये जो एटम है ये स्टेबल है, ये पेन जैसे है, ये भी एटम से बना हुआ, ऐसा नहीं कि ये पेन मेल्ट हो रहा है या पेन गायब हो रहा है, मतलब ये स्टेबल है। अगर ये पेन स्टेबल है मतलब ऑब्वियसली इट हैज टू बी न्यूट्रल, ये मुझे पता लग गया। बट ऑब्वियसली जॉन डाल्टन डिड नॉट स्पोक एनीथिंग अबाउट इट, अबाउट द चार्ज ऑफ एटम। जो द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली डिस्कस वाज, उसका नाम था जे थॉमसन, एंड ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस और थ्योरी जिसका नाम पड़ता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं इसके जो मॉडल थे, इसने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। एंड इस साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। So if you are following me, now let's understand about this, what exactly he did. He told an atom is basically electrically neutral, और वो उसने कैसे एक्सप्लेन किया, we'll see a lot of examples how he actually meant that. So this was his first point, that atom is electrically neutral, it has no charge. Yes ka, he proposed these things, that atom is electrically neutral and it has no charge. And then second point which he gave, what he proposed was, this is the second point he proposed. In an atom, both positive charges and negative charges are equal. Obviously ना, it's common sense, equal होगा तभी तो वो neutral रहेगा. So in an atom, both positive charges and negative charges are equal. Hope you have, if you have any questions or if you have any doubt till now, please tell me or I will continue. Okay, good. And the last point इसने जो बोला, an atom is made up of a sphere of a positive charge with negative charges, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्या किया जाता है, एम्बिल्ड होता है. We'll see that point. So this is the third, so to say, his postulate about the. We'll see, study one by one, एक एक का हम एग्जाम्पल भी लेंगे. तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, इसने तीन चीजें प्रपोज की. पहला प्रपोज किया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो चार्जेस. दूसरा, एटम इज एन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल. और वो किसने क्या बोला, जो ये पूरा एटम है ये क्या है, ये एक स्फीयर है, वो पॉजिटिव चार्ज है. और जो नेगेटिव चार्ज है दे आर एम्बेडेड. एक्चुअली देखा जाए, इफ यू गो टू द हिस्ट्री ना, बेसिकली अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, ये जो जॉन डाल्टन था ये बैठा था टेबल के ऊपर, ऐसा आराम से बैठा था. और जब ये बैठा था तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये सोच रहा था कि अरे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, ये न्यूट्रल कैसे होगा, ये ऐसे सोच रहा था.
तभी इसकी वाइफ ने इसको लंच में दिया होता है केक। अभी अगर आपने ये केक खाया होगा, ये केक समझ लो हमारे इसमें बोलते हैं ड्राई फ्रूट केक बोलते हैं, अगर आप हमारे लैंग्वेज में देखें तो वो केक ऐसा रहता है, ड्राई फ्रूट जैसा ऐसा केक रहता है, और उस केक के ऊपर ऐसा ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी ऐसी हुई है बाय द वे साइंस की, बाय चांस। तो इसने वो केक देखा और केक के ऊपर ऐसे ड्राई फ्रूट लगे हुए थे, तो उसको क्लिक हो गया, बोला अरे यही है मॉडल एटम का। क्या है मॉडल एटम का? कि जो केक है वो एक स्फीयर है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए अगर आप देखेंगे इसका नाम उसने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मतलब एक्चुअली होता है प्लम होता है वो केक, पुडिंग मतलब उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसको पुडिंग, इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको। तो उससे इसको ये क्लिक हुआ कि भाई ये तो ऐसा है। वहां से वो जो वाइफ ने इसको ब्रेकफास्ट में केक दिया था, जो ड्राई फ्रूट केक दिया था, उसने इससे नाम दिया इसको प्लम पुडिंग मॉडल। तो ऑब्वियसली जो ड्राई फ्रूट में जो ड्राई फ्रूट्स थे, जो केक था, इसने बोला वो पूरा क्या है, वो भैया पूरा पॉजिटिव है, चार्ज है, और उसमें जो जो ड्राई फ्रूट्स है वो नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फिक्स्ड, दे आर एम्बेडेड देयर। दिस वाज हिज theory. And now if you see how it exactly looks like, it exactly looks like अगर आपने वाटरमेलन सीड्स देखे होंगे, just give me a moment. Watermelon. सो बच्चे देखिए, मैं भी आपको और क्लैरिटी आएगा इस इमेज से। हाँ, ये देख रहे हो, आपको वाटरमेलन दिख रहा है, तो इसलिए हम ना इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अगर आप अभी वाटरमेलन में ध्यान से देखेंगे ना, जो ये पूरा रेड पार्ट है ना इसका वाटरमेलन का, ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो ये सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस होल स्फीयर। सो होप इट इज क्लियर व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, नहीं तो उसको हम बोलते हैं, वी आल्सो नेम इट एज वाटरमेलन मॉडल। एंड लेट्स इसका जो हमारा ग्राफिकल, आई नो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड बोल रहे सर वैसा दिखाओ। दिस इज योर थॉमसन चाचा।
Hello. So sorry. I think the light was had gone. Are you there? Purva, can you hear me now? Can you see the board? Purva, lights were off. So yes, sir. Okay, good. Sorry for that. We can't do help anything. So naturally, but lights were off, so I have to stop. So let's resume. We were studying about the our plum pudding model, and also we called it a watermelon model. And this is, I had sent you this picture also, what exactly it looks like. This is how it looks like. It looks like a watermelon के जैसे seed रहते हैं. That's how it looks like. So this is known as John Dalton's, basically J.J. Thomson's model. And this is the image जो मैंने आपको दिखाई थी. I think दो image आ गई है, नहीं एक ही image है. Oh, don't worry, I will do it again. So this is our J.J. Thomson. So this is basically what he speaks is about. He found that the atom consists of positive and negative charges. That's what he thought. An atom is electrically neutral, which is positive is equal to negative, and negative charges or electrons are fixed in the position of sphere. तो यहां तक बच्चा आपको समझ आ गया? Yes, sir. Okay, very good. Now, the model which he gave is known as plum pudding model. Then there was one very great scientist whose name was basically Ernest Rutherford. ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था ना, he was actually a student of J.J. Thomson. ये स्टूडेंट था J.J. Thomson. And when J.J. Thomson proposed this theory that this whole sphere is a positive charge, he told like that this whole thing is atom is neutral. This is basically, he told, is a positively charged sphere. ये पूरा पॉजिटिव है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स are embedded and they are fixed basically fixed electrons, and this whole thing you can see it's actually a is neutral. Basically whole atom is neutral. This is what he found. Now Ernest Rutherford wants us to prove this model क्योंकि इसके गुरु ने कुछ प्रपोज किया. Now he wants to prove that what his master proposed was right. So then actually comes, he did a very big experiment, you know, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम ही गेव, और ही फर्स्ट
did that experiment, जिसको रदरफोर्ड गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट भी हम बोलते हैं. We say it as Rutherford gold file experiment. Experiment. So he did this gold file experiment. Or his experiment actually what exactly he does. What he does exactly. Let's see that what exactly he does. He takes a gold file basically. What he does exactly is, so in this experiment, what he does, he takes a gold file, and why he takes gold file? Why he only takes gold file? ऐसा नहीं कि इसने gold file लिया, but he took not only gold file he takes a lot of elements, but in that gold was the thing which can be easily malleable. इसको आप इतना पतला बना सकते हैं, इतना malleable बना सकते हैं that it can become transparent. That much is the capacity of gold to become malleable. एंड नॉट ओनली दैट इज द रीजन. जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं घरों में, हमारी माताएं पहनती हैं, बहनें पहनती हैं, वो ऑर्नामेंट्स किसका बनता है? गोल्ड का बनता है. क्यों? क्योंकि उसको आप मैलेबल, उसको आप शेप दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. इंट्रिकेट डिजाइनिंग, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही बारीक डिजाइनिंग करते हैं उसके ऊपर, इसलिए गोल्ड यूज होता है. तो इसलिए उन्होंने गोल्ड को लिया ताकि आपको उसमें उसको एग्जैक्ट मिनिमम एटम्स मिले, जिससे वो क्या करने वाला था बेसिकली. ही वांटेड टू, यहां से इस एटम से ही वांटेड टू पास ए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल. एक अल्फा पार्टिकल इससे पास करना चाहता है, रेज, इस गोल्ड फाइल से. सो वाज लाइक अल्फा पार्टिकल जो इमिट करता था पॉजिटिव रेडिएशंस को. और इस अल्फा पार्टिकल इसने क्या रखा था, इसने इसको लिड बॉक्स में बंद करके रखा, बिकॉज लिड डज नॉट अलाउ टू रेडिएशन टू एस्केप. तो लेकिन उसमें उसने एक स्लिट दिया था, वहीं से ही वो रेडिएशंस निकल रही थी, और इसने इसको पूरे को एक ऐसा एक बॉक्स में बंद किया हुआ था, विच वाज लाइक फ्लोरिसेंट. ये पूरा जो बंद किया था इसने यहाँ पे, दिस वाज ए फ्लोरिसेंट स्क्रीन बेसिकली. So let me show you that whole image so that it will be a clear thing for you. And this experiment is there in your textbook. ये बेटा एक्सपेरिमेंट. होप यू आर एबल टू सी द इमेज. यहाँ पे इसने क्या लिया था, यहाँ पे गोल्ड फाइल लिया है. दिस इज द लेड बॉक्स. इसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. यहाँ से रेडिएशंस पास हो रही है, एंड द रेडिएशंस आर अल्फा, व्हिच आर basically alpha particle gives alpha radiations are coming out, which means they are positive radiations. And this whole thing is actually surrounded by a fluorescent screen,
and then you can see what exactly when this rays is striking to this atom or this one atom of this molecule atom, what is happening? There is some undeflected particles which are maximum in number passing through this slit, and there are some which get deflected, and there are very few which almost gets deflected by 180 degrees. So sound is cute. Sound is cute means what, beta? Sound is not coming. I don't know. See, I think you had to resolve the. See, right now I'm like I check the speed. It's like good speed out here, so I don't think from my side any issues. The only thing is that because you are the only student, so whatever you speak, I have to be. Otherwise, in other classes, what I do if some students, I have made a protocol. मतलब अगर किसी बच्चे ने बोला सर नहीं सुनाई दे रहा, और अगर किसी बच्चे बाकी बच्चों को सुनाई दे रहा है, इमीडिएटली टाइप यस सर इट्स क्लियर, तो उस बच्चे को इमीडिएटली नोटिफाई हो जाता नहीं देयर इज सम इशू ऑन माय एंड इंटरनेट इशू. But because you are the only student, so here it's very difficult to even tell you. But anyways, I checked my speed here. My speed is really good. I'm getting exact 5 mbps speed right now, so it's which is sufficient. So anyways, you don't have to worry because okay, मुझे आपको फिर टाइपिंग में ही पढ़ाना पड़ेगा. See, actually, you went. I think you left the classroom itself. So that proves that there is some serious internet issue on your side, which can. I will not speak about your internet issue again because it wastes my time. Because from day one, I'm telling you to please fix it. But anyways, you will not listen. What can I do? I'm providing this backpack जो भी हमने notes बनाया, जो diagram बनाई, so you don't have to worry.